गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका दोबारा स्वागत है। आज हम देखेंगे इन द स्पीक ऑफ इनटू एवरीडे चाइना, we'll go and understand Xi Jinping, all about Xi Jinping today. Uh, why did I take this topic? ये काफी दिन से people are telling me, sir, you need to do a analysis of Xi Jinping, character study कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने शुरू किया इसके बारे में सोचना कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए। डू आई डू इट ट्रेडिशनली और डू इट बिट हटके? I was a bit confused actually. So, but I kept reading about Xi Jinping, and what comes out is that you can't describe the person so easily. So you have to go with what he says. So you need to understand him the way he comes about. So that's what I'm going to present to you in his own words, largely. Uh, I'll compartmentalize what his beliefs are, performance, vagara vagara, but largely from his perspective. Right? It's going to be long. It's going to be complicated. It might be boring to some, but I think the subject was fascinating to me. Okay, and that's why I thought let me start this program. This picture, which you see, is Xi Jinping thought. If you think that picture is complicated, that's how complicated the man is. So we're gonna get hold of someone who's intense and complicated. I couldn't make a head or tail out of this chart. I tried expanding it, zero. Okay. Then I went into some sites जिन्होंने ये जी जिनपिंग का जो पर्सनालिटी है उसका एनालिसिस किया है. So I'll show you that so that comes across as the background for further analysis. Right? तो ये है इसका जो प्राइमरी एनालिसिस, आई मीन जो बेसिक पर्सनालिटी पैटर्न्स हैं, इट्स गिवन इन दिस ग्राफ. What does it say? The first thing is his primary personality pattern is dominant, this is controlling, forceful, aggressive, tough, and unsentimental. Pretty accurate. His secondary personality pattern, which comes through, is conscientious, respectful, dutiful, diligent, right? Attentive to detail, more technocratic than visionary. Again, fits to a T. What is the secondary personality pattern? Again, which third one which comes out is he's ambitious and confident, self-serving, bold, competitive, optimistic, and self-assured. All these characteristics describe Xi Jinping. There's no doubt. I can end today's talk with just this. But that will do injustice to all of us. So then I said, let me go into certain more things and then we'll see where it takes us. This man, ये जो आदमी है ये थोड़ा he's a enigma. इसका जो पिताजी है he was persecuted by Mao और 2 बार इसको पर्ज किया गया है. अगर वो बैकग्राउंड देखेंगे तो ही शुड हैव बीन अ रिफॉर्मिस्ट. नए नए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करना चाहिए था, परंतु ये उल्टा कर रहा है, बिल्कुल माओ के पीछे गया. इसके पिताजी माओ के अगेंस्ट थे, इसीलिए तो आउट किया गया था.
दूसरी बात, ये हर एक लीडर अपना बायोग्राफी लिखवाता है। हर एक लीडर चाहता है कि वो अपना कार्यकाल के बाद उसका नाम अमर रहे, और उसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वो लिखवाता है। पर ये एक एकमात्र लीडर है जो 2 साल पहले ही उसने प्री हिस्ट्री लिख दिया, इसका क्या हिस्ट्री है, क्या करेगा, ये किस लिए ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब लिख के चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से स्टैंप लगवा के छपवा दिया। सो ही इज ग्लोरिफाइंग हिमसेल्फ। एंड अगेन डाइकोटमी इज, ये एक आदमी है, शख्स है जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल होने के लिए बड़ा मुश्किल हुआ। 3 बार इसको कोशिश करना पड़ा दाखिल होने के लिए, चौथा बार सफल हुआ, पर एक बार अंदर घुस गया, इसको कोई रोक ना सका। अगर आप देखेंगे, आज एक आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, विच सेज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इनटू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लोग जो है ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अंदर जाने के लिए 2-2 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। वेटिंग लिस्ट के बाद वो प्रोबेशनरी बनते हैं, प्रोबेशनरी के बाद एक और स्तर होता है। ये पूरा एक प्रॉपर कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर बनने के लिए 4 साल लगता है। एक बार अंदर चला गया, ही इज मैनिपुलेटेड हिज वे टू द टॉप। इसका एक डर है, ये गोरबचोव नहीं बनना चाहता है। गोरबचोव इसीलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि जो इसके मुताबिक गोरबचोव वाज अ वीक मैन, जिसकी वजह से पूरा सोवियत यूनियन गिर गया था। और अगर आप सोचोगे तो रिफॉर्म क्यों नहीं करना चाहता है? रिफॉर्म इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर, और इसके लिए वो लागू नॉट एक्सेप्टेबल है। कोई भी डेमोक्रेटिक कार्यकाल में, किसी भी डेमोक्रेसी में आपको पावर शेयर करना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए, बीजेपी हैज टू शेयर पावर विद अदर्स, दो इट्स द बिगेस्ट पार्टी। बहुत स्टेट्स हैं, 11-12 स्टेट हैं जिसमें इनका पावर ही नहीं है। दे हैव टू शेयर पावर, फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जब भी आप रिफॉर्म करना चाहते हो तो दूसरे को पावर देना पड़ता है, पर ये देना नहीं चाहता, इसीलिए इसने रिफॉर्म ही नहीं किया। ओके, तो व्हाट आर हिज बिलीव्स, इसके अंदरूनी विश्वास क्या है, ये हम देखेंगे। मेरे ख्याल में ये पहले बात यह है कि इसका जो भगवान है कम्युनिस्ट पार्टी है, और ये सोचता है कि कम्युनिज्म इज अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू डेमोक्रेसी। ये इसका ठोस विश्वास है कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, राइट? ओके, अभी इसने एक किताब लिखा 2 साल, 3 साल, 3-4 साल पहले ही, प्रोटोटिव थॉट, द जी जिनपिंग थॉट। हिज थॉट जो सब लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी इसने लिख दिया, इट इज एंट्रेंस इन द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मार्क्सिज्म ऑफ आवर टाइम्स। और इसका यह भी बिलीफ है कि चाइना इज अ सिविलाइजेशनल पावर एंड इट मस्ट डिस्प्लेस अपस्टार्ट्स लाइक यूएसए। कि यूएसए वगैरह तो अभी अभी आए हैं, 100-200 साल से, 200-300 2 साल या 300 साल से ये पावर बने हैं। उससे पहले तो चाइना है सिविलाइजेशनल पावर, और ये सिविलाइजेशनल पावर को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जोड़ देता है। इसका मतलब, इसके मुताबिक चाइना में कम्युनिज्म जो है वो सिविलाइजेशनल है, और जब सिविलाइजेशनल पावर की बात करता है और किसी के नहीं बात करता, सिविलाइजेशन पावर तो एक ही है, चाइना। सो अगर आप देखोगे तो एक दिस इज अ ब्लाइंड साइड टू हिज स्टोरी, एक तरफा विचार है इसका, और डीट भी है। ओके,
ही बिलीव्स इन अथॉरिटेरियन रूल, डिक्टेटरशिप, वीक प्रेडिसेसर्स, इनका इसका इसका पूरा विश्वास है कि इससे पहले जो हू जुनटाओ और जियांग जेमिन है, दे वर वीक, और इनकी वजह से देयर वाज डोमेस्टिक chaos, करप्शन, एंड ये सोचता है कि ये दोनों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर में चाइना के लिए खड़ा नहीं हुए, चाइना के इंटरेस्ट के लिए खड़ा नहीं हुए। हालांकि वो डिबेटेबल है, ये ऐसी बात नहीं है कि वो, इनफैक्ट हू जिनटाओ ने बहुत चीजों को अंडरकट कर दिया इंटरनेशनल रूल्स ऑर्डर में, खास करके WTO एंट्री के बाद। पर इसका सोच ये है, क्योंकि ये चाहता है कि वही अकेला लीडर है। ही बिलीव्स अंडर हिज रूल China has made historic achievements and a historic transformation from standing up and growing prosperous to becoming strong. पहले तो ये अमीर थे, पर अभी क्या है, ये ताकतवर बन गया जब से ये टेक ओवर किया पिछले 10 साल से। It has entered a triumphant new era and has alarmed the West and the USA कि सब इससे डरते हैं। आजकल जो ये बात कर रहा है, and he believes in it again, he is preparing for the storm with a new spirit of struggle. पर ये जो तूफान आने वाला है, इसका क्या आकार है, ये कभी नहीं बनता था, और तकरीबन सबको ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो नया तूफान आने वाला है, दैट इज द स्ट्रगल विद एंड डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप विद यूएसए। यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप है उसका संकेत करता है। उसके अलावा इट्स हिज बिलीफ that the wheels of history are still grinding forward on Taiwan's inevitable reunification with the mainland. कि Taiwan has to unite with the mainland, जोड़ना चाहिए चाइना का मेनलैंड के साथ, और ये बार बार बता के आया है। लास्ट बार इसने ये 2 सेशंस में भी बताया है, जो 4 महीने पहले हुए थे, और अक्टूबर में 20th पार्टी में भी बताया, उससे पहले भी बताया। और उसके लिए ये नहीं बोलता कि सिर्फ लड़ाई करना है, हो सकता है पॉलिटिकली इंटीग्रेट हो। अगर पॉलिटिकली इंटीग्रेशन नहीं हुआ ताइवान का, लड़ने के लिए तैयार है। इसका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, क्योंकि जब मैं बार बार बताता रहता हूं, एवरीथिंग इन चाइना इज पॉलिटिकल। कोई ऐसा चीज नहीं है चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल नहीं है, सब कुछ राजनीतिक। इसका जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इट इज बेस्ड ऑन लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट माइंडसेट। ओके, और अगर आप नजदीक से देखेंगे, द चाइनीज फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इज असर्टिव एंड नेशनलिस्ट। इसके वजह से ओके, और इसका सोच ये है कि चाइना का जो तरक्की हुआ है, इट शुड सर्व अ पर्पस बियॉन्ड मेकिंग सम पीपल रिच। चाइना का बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, बहुत पैसा बनाया चाइना में, पर इसका बहुत ठोस विचार यह है कि बाकियों को भी काम आना चाहिए, आम आदमी को पैसा मिलना चाहिए। ये है इसका मूल सिद्धांत, और ये मूल सिद्धांत के वजह से इसने कॉमन प्रॉस्पेरिटी का पार्ट पढ़ाता है। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो नियत ठीक है कि गरीब आदमी को ऊपर उठाना है, पर तरीका उसका प्रॉब्लम है। ये सोचता है कि चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ should enable decentralization, consolidation of party power, and confrontation with the United States. ये ताकत के साथ चाइना का बोलबाला दुनिया में होना चाहिए। Key initiatives such as Belt and Road, China Dream, and socialism with China characteristics for a new era are made to serve this aim. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा, वो हम जानते हैं एज माओ जी जिनपिंग थॉट। तो
इसका जो सोच चाल चलन, सोच विचार सब कुछ है, ये it is made to ensure that China's economic power has to lift the downtrodden and has to get a say and serve a larger purpose in everything. Okay. ये भी बोलता है कि the community of common destiny for mankind will mold the interests of the Chinese people and those of the world's people together. एक दिस इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि चाइना का जो लोग हैं वो बोलता है कि दे शुड मीट विद द पीपल इन द वर्ल्ड, बट एक डिफरेंस है इसमें, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो चाइना का लोग सबसे ऊंचे होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। इसका ये भी बिलीफ है कि कि चाइना का ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी और सोशल सिस्टम आर इनकम्पैटिबल विद द वेस्ट। ये चल नहीं सकता, कम्युनिज्म और वेस्टर्न डेमोक्रेसी साथ चल नहीं सकते। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, वेस्टर्न डेमोक्रेसी और चाइना का जो सोशलिज्म है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा, स्ट्रगल होगा। और ये इसमें कोई देयर नो रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू सिस्टम्स। सो एक फ्रैक्चर, इसका सोच में एक फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर को इस्तेमाल करता है टू हाइड चाइनीज नेशनलिज्म। सो इसका मतलब, सो इट विल बी अ लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड एंड समटाइम्स वेरी शार्प स्ट्रगल। और इसका ये भी सोच है द वेस्ट इज इन डेकेडेंस, कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये पूरा यूएसए वेस्ट वगैरह वगैरह, कि ये इट इज इन डीके। इनका मॉरल वैल्यूज देख लीजिए, इनका चाल चलन देख लीजिए, इनका रहन सहन देख लीजिए, ये चलेगा नहीं। एंड इसका ये भी सोच है कि टू यूज वॉर टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट इन कॉन्ट्रडिक्शन विद पीसफुल डेवलपमेंट, विच इज पार्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट स्ट्रेटेजी। कि अगर जरूरत है कि हमारे विचारों के लिए खड़ा होना पड़े और लड़ना पड़े, तो लड़ेंगे किसी देश से। और लास्ट पॉइंट जो पहले भी मैंने बताया, इकोनॉमिक नीड्स मस्ट टेक अ बैक सीट टू सिक्योरिटी। और इसका ये जो इकोनॉमिक एंगल को पीछे हटाना, ये पिछले 2 साल से शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। इससे पहले ये था कि इकोनॉमी शुड डबल वगैरह वगैरह वगैरह, ड्यूअल सर्कुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अभी क्या है, इसका बिलीफ ये है कि इकोनॉमी परे हटाओ, सिक्योरिटी आगे। और ये एक डेंजरस सिचुएशन है पूरा दुनिया के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसके व्हाट आर हिज ट्रेट्स, इसका चाल चलन क्या है, हाउ डज ही एग्जिबिट देम। ही इज ओपेक एंड डिफिकल्ट टू डिसर्न। इसका मतलब हमें पता नहीं चलता ये करेगा क्या आदमी, इसका सोच विचार क्या है, ये आसानी से पता नहीं चलता। कोई इससे वो बता नहीं पाया। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं ये भी गलत है, राइट। और ही ब्रेक्स एक्सपेक्टेशन। सब सोचते हैं कि ऐसे करेगा उल्टा। सब ने सोचा कि ये रिफॉर्म का एजेंडा जारी रखेगा। सब ने सोचा कि भाई चाइना का तरक्की हो रहा है, इनका इकोनॉमी अच्छा बन रहा है और ये आगे जारी रखेगा। और यही चीज जो है वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है इसको। एक एक अहम रिपोर्ट है, किसी दिन मैं बताऊंगा, वो एक अलग वीडियो बताएंगे उसके बारे में, जिसमें वर्ल्ड बैंक और एक कमिटी, चाइना का कमिटी बैठ के 2012 में इन्होंने बताया कि चाइना को करना क्या है टू बिकम अ सुपर पावर। आई वोंट से सुपर पावर, टू ग्रो बेटर। ओके, एंड all that which was written was based on some expectation कि ये आदमी ऐसे करेगा, और इसको दिया गया था। उसने बिल्कुल उसका विपरीत किया है, राइट। एंड ही यूजेस पॉपुलिज्म टू अचीव ग्रेटनेस।
इसका पॉपुलिज्म ज्यादा है, एंड हिज पॉपुलिस्ट मेजर्स हैव गिवन हिम ग्रेट पॉपुलैरिटी। लोगों के बीच में ये बड़ा पॉपुलर है। आम आदमी इसको चाहता है। क्यों? वो सब सोचते हैं कि ये उनके लिए खड़ा होता है। जब ये बड़े बड़े अमीर लोगों का कारोबार तोड़ देता है, सब खुश हैं क्योंकि इसने ये बताया कि भाई हम इनको रफा दफा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा जो है आपके लिए लगाएंगे। कॉमन प्रॉस्पेरिटी। कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मुद्दा क्या है? अमीरों से पैसा लो और गरीबों को दो। हमारे देश में भी हमने देखा है ऐसे जन लीडर्स को, बड़ा खुश होते हैं उससे। ये इलेक्शन के टाइम में मिठाई बांट देते हैं सबको। मिठाई का मतलब आप समझते हो। ये he constantly gives that popularity thing, so that is why he's very 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 liked by masses. अगर हम सोचते हैं कि he is not liked, no, he is audacious without bounds internally. अंदरूनी हिस्से में ये जिस तरीके से मूव करता है, जिस तरीके से पार्टी को हिलाता है, he is audacious. इसने जिस तरीके से इसका पूरा मिलिट्री को साइडलाइन कर दिया, इज audacious. क्योंकि चाइना के अंदर द मिलिट्री इज द सेकंड रंग। सबसे बड़ा पॉलिट ब्यूरो है, उसके बाद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसके बाद आता है आपका फॉरेन सर्विस वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ा क्लियर मिलिट्री को साइडलाइन कर दिया। उसके बाद जितने इसके अगेंस्ट काम करते हैं, ऑल हिज ओपोनेंट्स, ही फिनिश देम ऑफ। उसके बारे में बात करेंगे आगे। वेरी ऑडोशियस, रिस्क टेकिंग, ये बाहर, सॉरी अंदरूनी हिस्से में। व्हेन ही डज एनीथिंग इंटरनल ही इज लाइक दैट, बट एक्सटर्नली ही इज वेरी कॉशियस। फूंक फूंक के चलता है, बात बहुत कर लेता है, बट अंदरूनी बाहर जो है ही इज वेरी वेरी कॉशियस, राइट। ही प्रमोट्स हिज ओन कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये तो हमने देख लिया कि इसके अलावा अगर आप आज के दिन, इसके अलावा या फॉरेन मिनिस्टर के अलावा आप आम आदमी हमारे देश में, कोई बताए इसका फॉरेन मिनिस्टर कौन है, कोई बताए इसका डिफेंस मिनिस्टर कौन है। फॉरेन मिनिस्टर तो जानते हैं तकरीबन वैंगी, डिफेंस मिनिस्टर कौन है या आगे और कोई है नहीं है, बस ये ही है इसका कल्ट है, बाकी आउट। ही इज रूथलेस एंड एम्बिशियस। जिस तरीके से इसने पर्जेस किया है, अभी भी पर्जेस कर रहा है। आपको कुछ दिन पहले ही बताया मैंने आपको कि इसका जिस तरीके से पर्ज करता है कि इट इज अनबिलीवेबल। ही इज इंटॉलरेंट ऑफ डिसेंट, कोई इसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता, और इज अ मैन इन अ हरी। मैन इन अ हरी क्यों बोल रहा हूं? ये जल्दी जल्दी में सब कुछ निपटना चाहता है, और वो इसलिए वो हमारे साथ भी ट्राई किया है। जब इसने टेक ओवर किया, he came and he wanted to solve the border problem, and this is what General Vinod Bhatia told us in one of us the episodes कि भाई फटाफट चेंज करो, जिस तरीके से हम चाहते हैं वो होगा। Man in a hurry, right? He's a man in a hurry to change the international order, right? जो international order which has been formed after about hundreds of years, he wants to change immediately in his lifetime, right? So people who are in a hurry invariably end up doing the wrong thing, and that's happening with China. That is why China is not liked these days. Okay, he's prone to U-turns and economic flips. बहुत यू टर्न लिया, पहले इसने लिया, कुछ बोला, उसके बाद उसने कुछ और बोल दिया। अब इकोनॉमी के बारे में काफी बोला, उसके बाद इकोनॉमी बैकसीट हो गया। अब क्या है, he has come back to economy. He now wants to get private वालों को छोड़ दिया। He broke the private sector completely 2 years back. Now he wants the private sector back.
So if you see, he has done zigzags, constantly zigzags. Okay, then he wants to control every aspect of life in modern China. हर पहलू के ऊपर इसका मोर होना चाहिए, इसका चाप होना चाहिए। अगर इसका चाप नहीं है तो वो चलेगा नहीं। राइट? ओके, he is manipulating all political conventions and bureaucratic inertia. क्यों? चाइना में भी बहुत ब्यूरोक्रेसी है और काफी there's a lot of intricate political issues there, and he manipulates all of them. He does not hesitate to purge. अगर इसको थोड़ा भी शक है, थोड़ा भी शक है कि ये आदमी मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, वो तो सफा कर देता है। अगर इसको थोड़ा भी शक है कि एक आदमी कोई इसके अगेंस्ट भी नहीं, इसका बात नहीं सुन रहा है, उसको आउट कर देता है। इसीलिए मैंने एक हफ्ता भी नहीं हुआ वो पर्ज के बारे में लिखा। अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से पर्ज कर रहा है, इसका जो चाहता है फॉरेन मिनिस्टर, इसको फटाफट उठा दिया। कुछ और नजर ये देखते हैं क्या होगा वो, और इसका कंट्रोल जारी रखने के लिए ही डजंट हेजिटेट टू पर्ज। एंड लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ही इज अ सेलेक्टिव व्यू ऑफ हिस्ट्री। माओ और डेंग सेलेक्टिव। जब इसने टेक ओवर किया था, ये डेंग के पीछे चला, उसके बाद अभी माओ के पीछे आ रहा है। अभी दोबारा लग रहा है कि यू फ्लिप करके डेंग के पीछे जाएगा, बट मोर टुवर्ड्स माओ। ही बिलीव्स दैट माओइज्म इज द आंसर टू चाइना। यही मैंने पहले बताया, डाइकोटमी। क्योंकि इसके पिताजी को माओ ने बाहर धकेल दिया एज पार्ट ऑफ अस ट्वाइस। लॉजिकली अगर मेरे पिताजी को माओ ने आउट कर दिया तो माओ तो मेरा जानी दुश्मन है। बट ये इसका साइकोलॉजिकल एंगल किसी को पढ़ना चाहिए कि ये बंदा क्या है, इसके विचार क्या है। ये अनोखा सिस्टम है। पूरा दुनिया में सब सोच रहे थे कि चाइना क्या है, विल डेमोक्रेटाइज। ये तो उल्टा ले जा रहा है वापस, और इसी में चाइना को तोड़ देगा ये। इसका लीडरशिप क्या है, लीडरशिप क्या चाहता है, व्हाट आर हिज आइडियाज ऑफ अ ग्रेट लीडर। ही वांट्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी विद वन स्ट्रॉन्ग लीडर। कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके ऊपर एक लीडर होना चाहिए। और इसका हाउ हैज दैट कम अबाउट? इट हैज कम अबाउट कि इन द लास्ट टिल 18th and 19th Congress, 18th तो ये he had just taken over. In the 19th Congress इसने 50% पॉलिट ब्यूरो और स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो को बदली कर दिया। But at that point of time, there were still people who were of the older variety, of opposing factions, Hu Jintao and Jiang Zemin. But in this, इसने सबको आउट कर दिया। There are only loyalists left. So now he's realized this first dream of leadership. He feels all his loyalists are strong, and he is the strong leader. And सारे loyalists are there on top because of him. Okay. He is the chairman of everything across the machinery of the state, the party and the military. सब कुछ यही है। अगर ये छोटा उंगली हिलाता है तो सब कुछ हिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं हिलेगा। Nothing happens in China, nothing major happens in China without his knowing what is happening, what is to take place. Okay. Now, personal loyalty is essential criterion for membership of the senior echelons of the party, irrespective of the impact of these decisions on international or domestic markets. बड़ा clear है. That's how he has made his complete leadership at the top. Loyalty is the first. Whether he's good or not doesn't matter. You see his premier.
He's supposed to be pragmatic, business friendly, X, Y, Z. But what has happened? He's also incompetent. And his incompetence was seen during the COVID time when he was in Shanghai. Everyone thought that Li Qiang will get sidelined. सब ने लिख दिया कि इसको सफा करो, बट इसको वाइस प्रीमियर नंबर 2 बना दिया. So personal loyalty is more important to him than anything else. अगर ये वफादार नहीं है तो उसको सफा कर देगा. पर अगर वफादार भी है, अगर कोई कदम गलत उठाएगा तो उसको भी सफा कर देते हैं. जिस तरीके से इसने अपना फॉरेन मिनिस्टर को सफा कर दिया, वो वापस नहीं आएगा. अभी तो और बात निकल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, कि वो रॉकेट फोर्स के साथ शामिल था वगैरह वगैरह वगैरह. एक और बात देखी गई जब से ये लीडर बना है, the Chinese Communist Party is more authoritarian and less open than it has been at any point since Mao Zedong. Mao Zedong के वक्त कोई बोल नहीं सकता था, बस एक ही आवाज था, एक ही सोच था, एक ही विचार था, जो वो बोले वही सही, बाकी आउट. ये भी वही कर रहा है. हु जिनटाओ और जियांग जेमिन के जमाने में जो पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में एक वीटो सिस्टम था, ये तो it's a very interesting thing. They had a veto system in the standing committee of the Politburo, where there were about, I think, 7 people in that. So what is that veto system? So if there's any important thing, Hu Jintao used to put it across to everyone. Even if one person said, no, this is not thing, we should not implement it, never used to implement it. In this case, if he says something, that has to happen. There's no other way. In fact, if someone dares talk against him, he's out. So, Deng Xiaoping started getting in a certain amount of inner party democracy. Jiang Zemin took it one step further. Hu Jintao took it 2 steps further. He has gone back to Mao. Okay. Last point. People close to power are more fearful and access to information is less widespread. इसके रोल में ये क्या सोचता है किसी को पता नहीं है. कोई पॉलिसी नहीं है. आज ये पॉलिसी दे सकता है, कल इसको बदली कर सकता है. उतना करता नहीं है, पर कर सकता है. और सब डरते हैं बात करने के लिए. So his leadership is absolutely authoritarian and nothing else, nothing of importance will move in China without his knowledge. और without his say so, or without his yes. अगर ये हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना. अगर गधा बाप बनाना है तो इसने बोलना है, नहीं तो नहीं बनेगा गधा बाप. ओके, इसका ड्रीम क्या है? What's his dream? That's important. His dream is 200s. What is 200s? China becoming a moderately well-off society by about 2020, the 100th anniversary of the CCP. CCP जो है 2021 में स्थापित हुआ था, माओ जेडोंग ने स्थापित किया था. 100 साल जब हुआ था, it had to become a moderately well-off state. और इसने घोषित कर दिया 2020 में कि ये moderately well-off state है और ये 100-year dream is achieved. Okay, the modernization of goal of China becoming a fully developed nation by about 2049, the 100th anniversary of the People's Republic. Because the People's Republic of China was established in 1949. So on its 100th anniversary, his dream is to realize all modernization goals. Okay, what is this concept of moderately well-off society? A moderately well-off society is where all citizens, rural and urban, enjoy high standards of living and completing urbanization. Okay, that
So he wants most urbanization to be happening. At this point of time, approximately 1 billion people live in about Chinese cities. He wants to take it up further. But the dichotomy is what happens to the countryside? वहां अनाज कौन उगाएगा? दिस होल थिंग इज अ डाइकोटमी. देखने वाली बात है ये क्यों कैसे होगा, क्योंकि आजकल तो वो सबको बोल रहा है कि भाई गांव जाओ, गो टू द विलेजेस, वर्क हार्ड, एवरीथिंग. सो दिस माइट चेंज. Flips, his flips are quite common these days. So this urbanization goal might go because now he is saying everyone go to the countryside, अनाज उगाओ. ये जंगल को काट रहा है अनाज उगाने के लिए. He is fearing food security issues. He feels that a war is going to come. If the war comes, Malacca Strait will close. If not now, 2 years, 3 years hence. If that happens, there'll be food security in food insecurity in China in a big manner, and hence they should become grain sufficient. So earlier, all the deserts of China were reclaimed by planting trees. He is taking them off, and he says now put agriculture there. Again, he is being populist. Why? The Chinese have a huge problem of hunger. इनका ख्वाब में ना, अगर खाने का famine, hunger के बारे में इनका ख्वाब आता है. Bad dreams of hunger and deprivation. So for that, if he is growing grain, he is being popular. And if he's, but at the cost of clearing land, and all that land was to stop desertification. Now he's doing the ulta. So he's doing a major flip at this point of time, because China is going through a major change. आजकल आप देखोगे तो मैंने कल भी एक 2-3 दिन पहले किया था, अभी कर रहा हूं आपसे जी जिनपिंग के साथ 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 मैंने एक वीडियो जारी किया है. कल आप देख सकते हो, सब अभी मेंबर्स सब देख सकते हैं, जितने आप मेंबर्स हैं हमारे साथ आप उसको देख सकते हैं. आई पुट इट. आई एम डूइंग मोर ऑन चाइना बिकॉज चाइना में जो बदलाव हो रहा है, अगर हम उसके ऊपर नस नहीं पकड़ेंगे, खतरा हमारे लिए बड़ा क्लियर है. मुझे डाउट नहीं है इसमें. और इसी बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप चाइना के बारे में और बाकी विषयों के बारे में भी अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया गनर शॉट में सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, क्योंकि तभी ये ट्रैफिक बढ़ेगा. अब सब लोग बोलते रहते हैं हमें कि सर ट्रैफिक बढ़ना चाहिए, बहुत लोग ये देख नहीं पा रहे हैं. आई नीड योर हेल्प. बड़ा सिंपल है. और आई नीड मोर मेंबर्स. जैसे मैंने बताया, जब तक मैं मेरे पास थोड़ा बहुत तो पैसा नहीं होगा, मैं बाकियों को बुला नहीं सकता, क्योंकि आई फील बैड टू कॉल पीपल whom I can't pay. ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत उनको गुरु दक्षिणा देने की जरूरत है, मेरे को नहीं चाहिए. ओके, सो इसके ड्रीम के बाद ये देखते हैं व्हाट इसका प्लान क्या है. What's his plan of his China dream and rejuvenation? So I'll read through it where there's an explanation required. Will say he wants economic growth and development, improvement of standard of living and catching up with the West, which I said, moderately well-off society, anti-poverty programs. He declared China as poverty-free, but it is not so. He wants to double the GDP per capita by 2035. And a modernized political, economic, and social system by 2049, 100 years of the CCP. It has 4 parts. It has a strong China. That strong China should be economically strong, politically strong, diplomatically strong, scientifically and militarily strong. Civilized China, where equity and fairness, rich culture, and high morals. Harmonious China amongst social classes, एक दूसरे के बीच में. Beautiful China
हेल्दी एनवायरनमेंट एंड लो पोल्यूशन, ये इसका काम है और इसका प्लान है। किस तरीके से कर रहा है वो बात अलग है। क्या ये हो पाएगा? मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका फ्लिप बहुत ले रहा है ये। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स टू एड्रेस मेनी फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसका सोच यही है कि पूरा प्लान भी यही है कि इनइक्वालिटी हैज टू बी flattened out through social justice and socialist principles. Endeavors to enhance China's international position commensurate with its newfound capability and security needs. ये सोचता है कि his plan, ये तो हम देख ही रहे हैं चाइना का, इसका ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, सिक्योरिटी इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन इनिशिएटिव, ये सब जनरल नरसिम्हन ने हमें बताया था। Move China closer to the center stage of world affairs so that Chinese will no longer remain second-class citizens globally. इसका सोच है और ये पट्टी बढ़ा रहा है सबको कि चाइना के citizens are second class globally. Hence, China should rise above that and be the center of the world order. He wants to gain a grip on foreign government leaders. ये important है. And their business allies by encouraging Chinese companies to invest in their local economies. He's manipulating many people. He tried with India and has failed. But इसने जैसे श्रीलंका में किया, वो राजपक्सा को पूरा पकड़ लिया। पाकिस्तान में देख लीजिए, इनके लीडर सब इसकी जेब में है, इसके सामने जाके साष्टांग नमस्कार करते हैं। अफ्रीका में बहुत लीडर हैं जो इसके गुण गाते हैं। सर्बिया के लीडर तो झुक के इसको सलाम करता है। सो ही इज गॉट दिस हैबिट ऑफ, इसने एक बना दिया एक गुट हु ट्रीट जी जिनपिंग एज गॉड। ओके, दैट्स एज अ प्लान। इसका मेथड क्या है? He feels that Mao and Deng Xiaoping won adulation through revolutionary exploits and epoch-defining achievements. He should do better. ये हर वक्त ये बोलता है कि माओ ने ये किया, अच्छा किया, डेंग ने ये किया, अच्छा किया, बट जो मैं कर रहा हूं वो दोनों का मेल मिलन और दोनों का मिश्रण करके और अच्छा बना रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Xi took power as a relative unknown, built his appeal from scratch, winning favor through populist deeds. Populist deeds के बारे में तो बताया मैंने। जब इसने पद संभाला, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, इसका चाल चलन क्या होगा, क्या किस तरीके से करेगा। In fact, he had gone to USA in one dinner in USA as a vice premier, or as a vice president. So he was having dinner with someone, and I read what he wrote, that man. He said this man was quite unimaginative. He was quite, what shall I say, not very bright. And he was worried about color revolutions, constantly worried about color revolutions in that dinner. So he's worried, insecure आदमी है। So people didn't know कि कौन है, and he did not come as the natural candidate. जब ये आया था, he was not the natural candidate. और भी 2-3 थे, but he came, like I said, he manipulated, और सबको इसने कन्विंस कर दिया कि मैं सबसे अच्छा हूं, I will not rock the boat. But just then ये बैठ गया बोट के अंदर at the top, इसने शुरू कर दिया। अभी मीडिया प्लास्टर्ड Xi's name and image across फ्रंट पेजेस, वेबसाइट्स, टीवी एंड न्यूज बुलेटिन। आप कहीं भी जाओ, चाइना करो तो जी जिनपिंग का शक्ल आएगा, और कोई है ही नहीं पिछले 15 साल से। धीरे धीरे डेंग जियाओपिंग और हु जुनटाओ सब के बारे में धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। ओके, देन पार्टी प्रेसेस पब्लिश्ड, जिसके कम्युनिस्ट पार्टी के जो जितने भी official presses, right, published hagiographic accounts of his life. इसके सब ये आजकल वीडियो निकल रहे हैं,
अखबार में लिख रहा है, इश्तिहार निकल रहे हैं कि इसने बहुत कष्ट किया जब बच्चा था और इसने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये किया, इस वक्त इसने ये किया. All his things are being brought out as if he has done something beyond Mao and Deng. Primary school textbooks describe him as Grandpa Xi Jinping, Dada Xi Jinping. तो सबके लिए जैसे चाचा नेहरू टाइप या गांधी जी टाइप बन रहा है ये अपने आप को, राइट. जी has accumulated titles of authority, becoming the party's core, the military's commander-in-chief, and the people's leader, a designation that echoed Mao's title of great leader. Great leader तो बोलता नहीं है, पर इशारा वही है. इसने अपना दो secure establishes कर दिया. He is established. What is the established which he has done? He is the core of the party, and the Communist Party is the core of the nation, and he is the core of the party. So he is the core of China. That is what he has established, two establishes. What is his performance? How is he performed on ground? Little in Xi's past has foreshadowed his actions as a leader. Okay? जो इसने किसी को पता नहीं था ये करेगा क्या. That's one thing जो बार बार आज बोलता आया हूं मैं. ये पहले किसी को पता नहीं था ये करेगा क्या, तो आगे जाके हम क्या बोलेंगे. So you expect surprises from him. He has presided over the longest running anti-corruption campaign in CCP history. 15 साल. Used to consolidate, और ये anti-corruption क्या है campaign? Just to gain power and political loyalty and control. 15 साल के बाद इसने ये achievement है कि इसके विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता. He's cracked down on all civil society movements, independent media, and academic freedoms. Overseen alleged human rights abuses in northwest Xinjiang region, Tibet maybe, and promoted a far more aggressive policy than his predecessors. तिब्बत में कम से कम डेंग जियाओपिंग ने एक बार बोला था कि भाई आप आओ बात करो दलाई लामा के साथ, हम बातचीत करके सुलह कर देंगे. इसने तो आउट, कुछ नहीं. जिंजियांग और तिब्बत में जो हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते. और उसके बारे में हमारे पास आपा लामा आके बात किया तिब्बत में क्या हो रहा है. इसने एक पलक भी नहीं है, इसने सब कुछ कर दिया. He has imposed his view on the educational system and culture of the nation. इसका जो बोलता है वही पढ़ाया जाता है. He ruthlessly controls social media and wields law enforcement to crush dissent. ये तो हम ये करता है, किया है. He has destroyed all bases of power except his own. आज के दिन चाइना के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है, सिर्फ Xi Jinping है. Within the party भी कोई अपोजिशन नहीं है. Centralized authority over CCP leadership, wiped out all party factions, provincial groups, and business tycoons who stood in his way. यहाँ तक Jack Ma, who was supposed to be one of the best entrepreneurs in the world, he has sidelined him completely, and he has sent him into the interior in China. What is Jack Ma doing? He's teaching teachers how to teach, and he's allowed to go here and there and speak. Otherwise, complete. आप सोच सकते हो कि बिल गेट्स को कल अमेरिका ऐसे कर सकता है, या टिम कुक जो एप्पल का है उसको कर सकता है क्या? हमारे देश में अदानी को हम आउट कर सकते हैं, या मुकेश अंबानी को जिस तरीके से जैक मा को आउट किया कर सकते हैं? नहीं, ये कर सकता है. He is presided over a new development concept whose essentials are revitalization of state enterprises, large-scale industrial policy, new restrictions on the private sector. Private sector को तो बिल्कुल इसने तोड़ दिया. अब उसका प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बिना प्राइवेट सेक्टर के चाइना आगे नहीं बढ़ सकता. सो ही वांट्स द प्राइवेट सेक्टर टू कम बैक. यही बात आज ये वीडियो कल सुबह जब हम आउट करेंगे उसमें है, प्राइवेट सेक्टर आइए. यही बात मैं 2 वीडियो पहले भी बता सकता हूँ. आजकल आप देखोगे ये आएगा कि प्राइवेट सेक्टर को लुभा रहे हैं ये. He's also carried out a political assault on the
टेक, प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्रीज, ये सब इसका कॉमन प्रॉस्पेरिटी का एजेंडा में किया है. सो ही हैज कंप्लीटली चेंज द कैरेक्टर ऑफ चाइना. जो चाइना, जो वाइब्रेंट चाइना था, काफी वाइब्रेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है. जो 10% जीडीपी का ग्रोथ होता था, आजकल आप देखिए जीरो में आ रहा है. कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बोलते हैं कि इनका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन हुआ. ये बोलते हैं 5-6% का जीडीपी बढ़ोतरी हुआ है, पर ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. और ये भी अभी ये वापस प्रॉपर्टी के ओर जा रहे हैं, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी कर्ज लेके. सेम ओल्ड, दे गेटिंग बैक टू debt fueled property and infrastructure growth. So that's how bad he is for China. He's actually finished off China, mere hisab se. Okay, he's had a mercantilist approach to international economic policy and anchored in his doctrine of dual circulation of an economy. इसने वो dual circulation, he brought it out during COVID. So that's his story. Okay, he strives for self-sufficiency and resecuring of China's old global supplies in response to America's strategy of systematic decoupling. ये चल रहा है अभी, decoupling, de-risking, और he wants to have an alternate system. He is completely committed to accelerate the internationalization of the renminbi and to increase an increasingly bipolar financial system internationally. He wants to make yuan the reserve currency of the world and take the dollar out. But there are problems because no one accepts the yuan, no one trusts the yuan, no one trusts him. Who will trust him? He is one chap who spelled out his thought much earlier than his predecessors. Jiang Zemin और हु जिंटो ने तो थॉट भी नहीं किया. डेंग जियाओपिंग के बाद यही महाशय थॉट इसने किया, और ये 5 साल के अंदर कर दिया, और अभी और भी बढ़ाएगा. Politics continues to move to the Leninist left, economy to the Marxist type, and Chinese foreign and security policy to a much more assertive nationalist right. So this is a dichotomy. Foreign security policy, foreign affairs, security, economy, ये राइट जाना चाहता है, बट अदरवाइज ही वांट्स टू गो पॉलिटिक्स जो है लेफ्ट को. ये फटेगा कहीं ना कहीं. दिस इज अ प्रॉब्लम. He prefers big state corporations over private sector, whom he distrusts. He doesn't trust private sector. ये मैंने पहले ही बता दिया. क्यों? Private sector represents loss of control. इसीलिए इसने तोड़ दिया था, क्योंकि वो इतना बड़ा बन रहे थे कि उनके ऊपर इसके काबू में नहीं आ रहे थे. जैक मा खास करके इसका काबू में नहीं आ रहा था. आउट. इसका नाइटमेयर क्या है? इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है. मैंने पहले ही बताया. Why did the Soviet Union disintegrate? Why did the Soviet Communist Party collapse? An important reason was that their ideals and belief had been shaken. It's a profound lesson for him. और इसका डर भी यही है. ये डर होते हुए, ये मैंने पहले भी एग्जामिन किया, मैं दोबारा एग्जामिन कर रहा हूं. क्या ये हो सकता है? आप देखिए, what is the USSR model and what is the China model? I'll go over it. In the USSR model, communist opacity hid hollowness. Same hollowness is now coming forth in China. There was extreme corruption. There's extreme corruption here also. There was loss of faith in communist ideology. ये आजकल ये शुरू हो रहा है. अगर कुछ ना करो तो जॉबलेसनेस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्राइक्स, व्हाइट पेपर, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है. डिसमल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन द USSR. यहाँ क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर स्लोली गोइंग डाउन. कल सुबह जो वीडियो आएगा आप उसमें देखिए, यही बात है. आम आदमी के पास पैसा नहीं बच रहा है. धीरे धीरे इसने जितना भी पैसा बन गया, ये डूब रहा है. कैसे डूब रहा है उसमें आप यू विल सी टुमारो. एलाइट इन फाइटिंग अभी नहीं हो रहा क्योंकि इसका कंट्रोल बड़ा रिजिड है. क्या ये कंट्रोल रिजिड
this rigid control, will it lead to a complete breakup? ये देखने वाली बात है. The rigid USSR reform system could not reform. इसने इतने बार रिफॉर्म कर दिया चाइना सिस्टम को, वो अपने आप टूटने के चक्कर में है. Gorbachev wanted reform but could not reset the Stalinist model back to Leninist principles. Xi Jinping is very clear. He has reformed completely to state control. There is personalized politics have stunted institutions. That is happening in China also. Inefficient government-owned factories could not produce what the people wanted, and what the people wanted was not produced. ये कभी भी हो सकता है चाइना के अंदर. Supply simply did not match demand. ये भी हो सकता है क्योंकि इनका फैक्ट्रीज बंद हो रहे और इनका अनाज नहीं है अंदर. अगर कल के दिन मलाक्का स्ट्रेट या कुछ हो गया, एम्बार्गो लग गया चाइना के ऊपर, ये भूखे मरेंगे. सोवियत यूनियन कुड नॉट सर्विस इट्स डेट. बट इनका क्या है, एक डेट बबल है, डेट का गुब्बारा है. और डेट का गुब्बारा कल कल सवेरे आप देखिए ये वीडियो और वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा. ओवर मिलिटराइज इकोनॉमी, यहाँ भी वही है. कि देखने वाली बात यह है कि one has to see whether the USSR model will apply to the China model. I have written articles that whatever happened during Chernobyl, it took 5 years for Soviet Union to collapse. Whatever happened during the pandemic, we are in the 3rd, 4th year. By the 5th, 6th year, what will happen to China? I don't visualize it collapsing, but I visualize it going down fast. We'll talk about it as we go along. Right. So today I've outlined this whole story, okay, Xi Jinping and what he has done, how he has performed, what is his method, what has been planned. Ye wo. What does he want? He wants a Sino-centric world order. What is a Sino-centric world order? That's my next peek into Everyday China, where I'm going to say what are the tenets of this Sino-centric world order? What will happen? अगर Sino-centric world order आ गया तो इसका परिणाम क्या होगा? आज तक हम बोलते रहे, everyone talks of international order and rules-based order and a Sino-centric order. I'm going to put it down in writing. I've actually put it down. I'll make a video of it and put it out. It will be a short video, but I'll put it out. And will this dead bubble go? Will this grey rhino happen? A grey rhino is something which Xi Jinping has spoken of in the 20th Party Congress. Will that happen? Tomorrow morning. Members, of course, can see it today. Right. ये था जो भी मैंने बोलना था Xi Jinping के बारे में. Now I'll take on questions. और लास्ट में दोबारा मैं आप सबसे दरखास्त कर रहा हूँ, please subscribe to the channel. I see that in the past 1 week the number of people who are opting onto this channel are less, and you're joining the channel is also have gone down. So please get on. I need more help. So that the thing spreads. A lot of people have said, sir, please don't stop this channel. I will not stop this channel. People have said कि भाई आपके ही चैनल में आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि चाइना क्या है, and international affairs you get a balanced view. That's my idea. And I see a lot of Chinese trolls are coming onto my channel, which means that I am talking something useful for India, not for them, and they're worried. Anyway, now we'll take on questions first. At the outset, thanks a lot, sir, for this thing. I see you have a question. We'll answer that. And of course, Harish, thanks a lot. You come after a long time. I understand that you're able to rarely join due to the workload, and that you see my videos, I come to know. Right? So happy to see the channel grow. I'm this thing. And yes, I need a lot of help, and I need a lot of good wishes for the project at IITM to start go through, because it means a lot for our country. मैं सबको बताना चाहता हूँ, what I'm trying is to get technology which doesn't exist anywhere, made in India for India, right? And so that tomorrow we are known as a scientific nation.
Okay, anyway, so let me take some questions. A lot of them, but so don't worry, I have no issue. Okay, CCP have a deadline to make a China a superpower in a short window, aggression on all borders. But why be aggressive with inexperienced conscripts and when senior officers have never seen combat? That is their nature, Shritik. उनका आदत है ये. Okay, so yeah, I'm also going to take out a video, maybe a little later, on why China can't go to war and how will it go to war if it does go and what are the problems in it, because everyone thinks China is going to attack everyone. I don't think it can. Okay, is there any projection of if China economy shrinks to X trillion, there could be rebellions against CCP or CCP internal rebellion against C? Wonder which will happen first. It's a very important question you have raised. I think someone has to start thinking of it. The problem in China about rebellion is there is no organized leadership. जो भी organized leadership है, it's all cleaned out. So there's a unitary leadership of the unitary variety, completely top to bottom. So in the absence of any other thing, you will find that there is no revolution which will counter revolution which will happen. And that is one of the reasons why he might not take Taiwan. Because if he takes Taiwan and makes political concessions, politically integrate Taiwan, it's possible that democracy might come into in China. If that happens, he's in trouble. He'll not do it. So if he has to take Taiwan, it has to be at his cost with his politics. Okay. So, but then, agar their standard of living of the Chinese goes down, which will happen, right? There's going to be a problem. And I feel, this is my view, that it's another 4 years, 5 years, this will start getting reflected. And once the demography starts going down, that will happen after 4 5 years, 2030 to 2035, the demography is going to dive very fast. The thing about demography is, and the population is, it is fixed. It can't change. Age can't change. Okay? The number of people who are getting born can't change. It can't change at all. I mean, marginally it will change, but not more. The age for lying is over. So the demography is one thing which is fixed about China. So if you base your calculations of China and predictions about China based on the demography, you will not be wrong. And that's what I'm doing, right? Kamal saying uh, Z Z fancies to be Mao 2.0. I think is a dangerous man. Bad news for the world with a terrible, terrible news for the Chinese. I agree with you completely. I pity the Chinese, right? I pity the Chinese completely. Vishwanathan, the global and Western economy have enmeshed themselves with China like a noose around their neck. It would take considerable effort tactically to untangle themselves. Yes, I agree. This is what is they are doing. Is the Western business ready to sacrifice their profit in their national interests? A number of Western media public intellectuals have transformed to value left socialism by China, which are uh, it is there to some extent. They're trying. You see this happening in France. You see this happening in Germany. You see this. America is very clear that they're going to decouple. The problem is Europe. Europe was over invested in China. Now they're finding it difficult to decouple. They want to decouple. And the tendency which is coming is there. The biggest flip which has happened is in Italy. Italy was the closest to China. It is now moving away. It, I mean, these things will happen, right? Gunners need help the general. Yeah, thanks, Anand. You have been so nice. Okay, very interesting and informed take on an opaque and difficult to discern subject. Thanks, Sanjay. That's the whole idea. I do difficult things. I try and make difficult things look simple. Okay, and like I said, please subscribe to this channel. Because one thing you'll be clear is I put in a lot of hard work to ensure that I speak the correct thing. What's not correct, I'll not speak.
And the second thing is you'll get it in the simplest form I can understand. Okay. Uh, Unlike Mao's period, Xi Jinping is comfortably placed economically, industrially, and educationally. This gives an autocratic setup to handle situations with enhanced confidence. Uh, this may also explain, it explains everything, but the fact is today it's getting undercut on its own. So that is why you find him shaky. That's why you find him doing more backflips. The more backflips he does, in fact, there's one article which has come out which is called The Great Leap Backwards. Though I had written, I did it, The Great Leap Backwards, as a video on the economy. There's someone who's written an article, Great Leap Backwards. It's in salon.com. Have a look at it. Salon.com type कीजिए और Great Leap Backwards type कीजिए, that article will come out. Someone by name Joseph Tauke or something like that. It's a very interesting article on China. Yeah, with such authoritarian tendencies, how will Western Europe recover their massive industrial investment? Have they lost it or will they compromise? See, this will take time. That's why I said nothing will happen in a hurry as far as China is concerned. It will take time. Their collapse will also be slow, right? Basically, Europe is already taking steps to recover out. China, USA will definitely go. That is why they are coming towards India. And that is what we have to take care. Okay, salute. Thank you, Srinivas. सौरभ चौगले टॉक इन भारतीय लैंग्वेज. भाई मैं कौन से भारतीय लैंग्वेज में नहीं बात कर रहा हूँ. भारतीय लैंग्वेज तो तमिल भी है, हिंदू इंग्लिश भी है, तेलुगु भी है, गुजराती भी है. तो अगर आप सोचते हो कि हिंदी सिर्फ भारतीय लैंग्वेज है, ये गलत है. सॉरी चौगले जी, आप अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए. यू मस्ट चेंज बिकॉज we are a nation with over 27 languages. You open your 1 rupee note or 10 rupee note or 100 rupee note and you see, can you get me a note, 100 rupee note or whichever note? You see how many languages are there. After all, akkadundu. So how many languages are there in a note? They are all Bharatiya languages. Okay? आप देखिए इसमें, ये देखिए, ये कितने, how many languages are there in this note? These are all Bharatiya languages. I can speak on any Bharatiya language and you should have no objection. It's a shame that you people, such people are also there who don't understand other languages and their importance. The day we start talking like this, it's bad. Okay. Respected sir, is there any chance that China gets Xi's replacement in this decade or so? If yes, then who? I don't see anyone. To be very honest, see, these things can happen. He might die tomorrow, someone might come, we don't know. But at this point of time, at least for the next 3-4 years, there's no replacement. Ask General Shankar, does Xi manifest the CP's worldview or a Chinese worldview? He gives only his worldview. And in that system, only his worldview will go. And he's entrenched his worldview completely. He's done this systematically over the past 10 years. So others' worldview won't change. See, today there's one chap called Florican. Okay. He has put a comment on one of my videos on China. He says, you know nothing. You're an idiot. All that. So they're completely brainwashed to his way of thinking. Vanakkam, sir. We always keep talking of Chinese interfering into India, especially in the Northeast. Are we doing anything like that to China, in China, to destabilize them? What is India doing to psyop Z? We are weak in this. Let me tell you very clearly, Srinivas. Firstly, I don't think China is doing anything very significant in the Northeast at this point of time. Not yet. They might some other day. Because they're worried. Because if you start doing something in Tibet, they'll be up a gum tree.
Secondly, you must realize that you have a government in exile of Tibet in India. That's a problem. Okay. So they don't have a government in exile of Manipur or, in China. No one goes there. So you have a government of exile which is, and you have huge settlements of Tibetans here. And this generation of Tibetans are all India oriented. Especially many of them are born and brought up here. They're still Tibetans, they're not Indian citizens. So he's got a bigger problem actually, a long term problem. But you're right, we need to do more. We are somehow not able to do enough. Sarika Jain. Sir, India is the second largest producer of rice in this world. How do you think India's current decision to stop exporting non-basmati rice affects? It doesn't affect China because anyway we are not exporting too much to them. And if we don't, well, so what if? Yeah, your balance of trade will go down. That's a different story. But that's a thing. So, but just think, China is today going to become rice deficient. In fact, one of the things which I'm going to do, Sarika, is look back into the food insecurity and climate change. How it's going to affect China. That's important. And climate change is happening even at the worst period of climate change. You're able to be self-sufficient and even probably export some rice. So you're in a stronger position because certain things have changed in the past 2 years. And what is that? Basic issues of national strength have come forward. You're still the largest producer of milk in the world. You're still one of the largest producers of rice in the world, and you're surplus. China is not. So everyone thinks electronics, wo is the source of national strength. No, it is basics. We are stronger. The security system is actually very poor. I'll get to it some other day. Okay. So, is it Xi Jinping's overconfidence or fear of failure which is making him commit mistake after mistake? It's his belief in himself, overconfidence. That's the problem which he has. Yeah, we have so many languages, that's our strength. That I agree with you. Completely, Hati. We should, our diversity is our strength and we should propagate it. Okay. We should not be unitary like China. That's the worst thing you can do. Z is more interested in people who are servile. Do you think he has problem with people who are competent as if he has intelligence? Completely. Anyone who is intelligent, and no, it's not that he is not against people who are intelligent, but loyalty. If a chap is not loyal, he's out. It doesn't matter how intelligent is he. Nothing is known about his children. I agree with you. I also not seen anything. So please ignore trolls like Chogle guy. Skip. Oh no, Srinivas, it's like this. People should know. अगर एक चौगले इधर आके ऐसे बात करते तो बहुत भी होंगे जो सोच रहे होंगे. सी लॉट ऑफ पीपल हैव सेड सर हिंदी में बात कीजिए. हमारा कोशिश यही है कि हम हिंदी में भी बात करें. पर बहुत लोगों ने बोला कि भाई आप हमें हिंदी नहीं आता, आप इंग्लिश में बात कीजिए. मैं इसलिए बात कर रहा हूँ. मेरी बस की बात नहीं कि सिर्फ हिंदी में बात करो या फिर सिर्फ इंग्लिश में बात करो. So I speak in both languages to the best of my ability. But I will not do something कि ये एक ही बात भाषा में बात करो. कल के दिन it's possible I start speaking in Telugu, which is my mother tongue. And language is something which we have to communicate, learn. It's only a medium of communication. More important thing is what I talk than how I talk. I mean, this is a lesson to many people who are on this channel and listening to this channel. Why China again interested in talking to US after they rejected talking? See, they will talk. Both countries have no choice but to talk. Even we should talk. We should also talk to China because we don't have a choice other than that. Okay, talking is, but fundamentals won't change. That's the important thing. Okay. Sir, can Xi really rely on only Chinese economy to project power without international allies? At least USA has Japan, South Korea, and other. Yeah, the thing with China is he's got a whole lot of
people through the BRI, through SCO, through BRICS. You'll see this happening. BRICS के बारे में अभी मैंने I took out a video 3-4 days back. See that again. We'll talk more of BRICS coming week. Okay. Okay. Only issue is we don't have national level policy to address issue of language where kids in primary school are taught one language for the purpose of communication. In English in India is skill, not language. Yeah, it's not. I mean, let's not get involved with it. We need to talk to each other more in different languages. English is one medium. That's about all. I don't have any great view of English. If Xi leaves, will China immediately stop all border skirmishes and begin negotiation? We'll have to see. देखना पड़ेगा क्या है. It depends on the next leader. Depends on how China is at that point of time and how much chaos it goes through. The history of China is that whenever the central authority has been strong, China has been strong at the borders. When the central authority has been weak, China has collapsed. Okay, why China? Yeah, we've spoken of this. Sucharita Sarkar, sir, China's GDP is 480 million trillion. Yeah, your views. Yeah, it's grown. I have no problem. It is not 26% growth per year. It is their incremental growth over a period of time. Okay. But a lot of the growth is dead growth, which I keep saying. If you dig again, Sucharita, please see tomorrow's video. You'll understand what I'm talking. Tomorrow morning, you'll see that video out. That explains where Chinese economy is. It's become a big elephant which is not going to perform. You see, fundamentally in economic theory, if you dig a ditch and fill it up, it's GDP. Your GDP grows. So if you build a house, your GDP grows, but no one lives in it. What's the use of the GDP? A lot of useless GDP in. So don't go by GDP at all. Yeah, your views on same thing. Okay, China and Russia's relationship. What will happen to India? Nothing will happen to India. Again, please see my current articles and videos on the global power matrix. I did 6 of them. India is going to improve. India has become from a swing state, it's becoming a balancing power. Today, everyone needs India to balance. That's why today China is coming after us. Okay, Janet Allen in China last week. What do you make of that, sir? Look, they have to do something. So leave it at that. I'll speak of the US-China relations some other day. Today we're talking of Xi Jinping. 3 languages. Yeah, I agree with you, Bharat. I completely. हमें भी थोड़ा बहुत तो पंजाबी आता है. मैंने भी आता है पंजाबी. समझ सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. So the more languages we understand, the better off we are. Do you think the next leader would follow Xi? We don't know. We don't know, Vijay, what will happen. Let's see, because we don't see anyone coming. Okay. One China analyst says that China has only 300 bodyguards and 8,000 policemen to protect them from. Yeah, I agree with you. He's got a big problem. He's got a big problem. He is very distrustful and is very worried. Okay, he must be worried. Okay. Vaman, will Russia become new Saudi and China, USA as Russia? Oh, well, we'll talk of all this later, Vaman. We are talking of Xi Jinping today. Is there anything we can learn from Xi? Yeah, the first few things which I said, he's very conscientious, he's very nationalist. He works for China. Whether you can say whatever you want about him. He's a Chinese first and he works for China. Okay? Right. Thanks a lot. I think I've had a great time. I hope all of you also enjoyed this thing. I've enjoyed it. So just wait for this, where I'm going to put out the tenets of the Sinocentric world order in a couple of days. It depends when I get time to record. I'll do it. This week I can't. If I get a time to go live, I'll go. But otherwise, it'll come out. But watch tomorrow's video. All members can watch today that video, which is open. It's an interesting video, right? And of course,
I want more members. Welcome. Thanks a lot. Good evening and Jai Hind.